So what we learned yesterday was some basics and some introduction to what is actually the impurities in water, what are the types of impurities, then the types of hardness, what is the range of hardness, and the source of water for this range of hardness. Further, we understood the units of hardness. Okay, and then we lastly understood how to convert ppm to mg per ml. Then what are the different units of hardness that is generally used all over the world? And lastly, we understood the conversion of any kind of hardness from any kind of salt, say calcium sulfate or magnesium sulfate, to the standardized form, which is calcium carbonate. Okay, so I had just given you one formula. And then we understood what are the ill effects of having hard water in our system. So we specifically talked about the use of this water in boilers. So how priming and foaming is induced because of hard water in boilers. How does it cause boiler corrosion? How does caustic embrittlement actually takes place? And what is the actual meaning of scale and sludge? And how does it and why does it take place? As we had actually went through yesterday in great detail. Now, when we talk about hardness, there is some specific thing that we need to understand, and that's what we call it. So, yesterday, what I told you was like the types of hardness that I described you was soft water and hard water and slightly hard water. So, this was the range of hardness that the water has inside it, or whatever the water that we use, what is the range of hardness that's present. That's what we discussed yesterday. Now, very specifically, when we talk about the types of hardness, we have two basic types. So, if I try to tell you the types of hardness, okay, so there are two basic types under this. One is permanent hardness, and the other one is temporary hardness. So, let's first focus on the temporary hardness. Now, what is the basic difference between a temporary hardness and the permanent hardness? So, when we have temporary hardness in water and if we boil that water, okay, the hardness is removed. Means ऐसा कंपोनेंट जिसके वजह से वो हार्डनेस आ रहा था, वो कंपोनेंट बॉईल करने के बाद जो है वो निकल जाता है, या वो कंपोनेंट डिसॉल्व हो जाता है, या वो कंपोनेंट किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो टेम्पररी हार्डनेस कॉजिंग एजेंट था, कॉजिंग सॉल्ट था, दैट इज रिमूव्ड एंड द हार्डनेस ऑफ द वाटर इज लॉस्ट, मतलब वो बन जाता है सॉफ्ट वाटर. ओके, परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है, इफ यू बॉईल इट, ओके, द हार्डनेस इज स्टिल इंटैक्ट. ओके, हार्डनेस वहां से जाता नहीं, हार्डनेस जाता नहीं मतलब क्या, ऐसे कंपोनेंट जिसकी वजह से वो हार्डनेस इम्पार्ट हो रहा है उस वाटर के अंदर, वो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स या हार्डनेस कॉजिंग का जो भी कंपोनेंट है, वो जस्ट बाय बॉइलिंग वहां से निकलता नहीं है. ओके, so such type of water which on boiling does not loses its hardness is called, like that water is called to have permanent hardness, and the material that induce such kind of hardness are called permanent hardness causing agents. Okay, and the same applies for temporary hardness. So जो भी कंपोनेंट हार्डनेस कॉज करेगा, उसके वजह से अगर वो बॉइलिंग करने के बाद कंपोनेंट निकलता है तो वो हो जाता है टेम्पररी हार्डनेस, अगर वो बॉइलिंग करने के बाद नहीं निकलता है तो वो हो जाएगा परमानेंट हार्डनेस. ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है? अब ये जो टेम्पररी हार्डनेस है, जनरली कौन से कंपोनेंट जो है वो इम्पार्ट करते हैं? सो दिस इज इम्पार्टेड बाय ये जो CaCO3 है एंड MgCO3 जो है, ये दीज थिंग्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन नेचर. तो CaCO3 जो है इट इज नथिंग बट लाइम. ओके, अब ये जो लाइम है, ये जब इंटरेक्ट करता है
तुम्हारे एटमॉस्फेयर के CO2 के साथ, ओके। एंड जब उसके ऊपर पानी भी गिरता है, तो सपोज मेरे पास एक लाइमस्टोन का एक पहाड़ है, इफ यू नो, जो चूना जिसको हम लोग बोलते हैं, चूने का पत्थर, लाइमस्टोन, ओके। सो ऑफ कोर्स सराउंडिंग में मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड जब ऊपर से रेन वाटर इज गोइंग टू कम इनटू कांटेक्ट, what will happen is this will get converted to this, okay, and these are the components that will actually impart hardness to water, temporary hardness, ओके। तो परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग एजेंट जो है वो मैंने आप लोगों को कल ही एक्चुअली शॉर्ट में बता दिया था, लेकिन मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया था कि ये परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग एजेंट्स है, लेकिन उनका नाम मैंने आप लोगों को कल बता दिया था, विच इज CaSO4 and MgSO4 and CaCl2 and MgCl2, ओके। याद है कल वाले लोग? ओके, ग्रेट। सो दीज आर द कंपोनेंट्स दैट विल एक्चुअली कॉज यू परमानेंट हार्डनेस। इसका मतलब ये है कि ये बॉईल करने के बाद ये वाले कंपोनेंट्स जो है दैट विल नॉट गो, लाइक दे विल नॉट अंडरगो एनी काइंड ऑफ रिएक्शन or any kind of decomposition, and this material will remain as it is, which will cause ultimately hardness to our water, okay।